जो साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं भी है उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। बेटे को उन्होंने इनरोल किया इन देयर स्टडी एंड शी वाज गिवन $1 फॉर देयर पार्टिसिपेशन व्हिच इज लर्निंग बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने देखा था जस्ट आउट ऑफ सुल्तान रीच। पहले तो सुल्तान ट्राइड टू गेट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PowerWithinPsychology। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन साइकोलॉजी, सो मेक श्योर टू ट्यून इन। बट बिफोर वी बिगिन विद आवर सेशन, I would like to introduce you all to PowerWithinPsychology. PowerWithinPsychology is India's leading mentorship and guidance platform for all psychology aspirants for the past 7+ years now. PowerWithinPsychology offers various courses. Our AARAMBH Batch is for all those who wish to pursue their bachelor's in psychology. Our Lakshaya Batch is for all those जिन्होंने अपनी graduation complete कर ली है and they wish to pursue their masters in psychology. Our Safalta Batch is for all those who are targeting MPhil or MA clinical entrance examinations. Our Sankalp Batch is for all those who are targeting UGC NET JRF or GATE examinations. Now, since this video is for CUET PG aspirants, I would like to introduce you all to our Lakshaya Batch. लक्ष्य बैच में CUET PG के साथ ही साथ मास्टर्स की और जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। लक्ष्य बैच का 2026 का सेशन शुरू हो चुका है। सो इफ यू हैव नॉट येट एनरोल्ड देन डू कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। ये हमारे लिस्ट ऑफ टॉपर्स है फ्रॉम द पास्ट 4 years। अगर आप इनकी स्टोरी या इनकी जर्नीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं देन डू चेक आउट टॉपर्स टॉक सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद आवर सेशन। जैसा कि मैंने कहा आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम लर्निंग यूनिट। ऑलराइट, नाउ the first experiment is the salivating dogs experiment. Now this is one of the most common and most widely known experiment in the field of psychology. जो साइकोलॉजी स्टूडेंट नहीं भी है उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, और जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ऑलराइट, सो नाउ दिस वाज कंडक्टेड बाय इवान पावलोव who was a Russian physiologist, जो कि इनिशियली डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पे रिसर्च कर रहे थे, बट ही सून डिस्कवर्ड दैट डॉग सिर्फ खाने को देखकर ही नहीं बट खाने से रिलेटेड कोई भी साइट या साउंड को भी देखकर सैलिवेट करने लग जाते। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट, बट बिफोर वी हैव टू रिमेंबर सम की टर्म्स। सो अनकंडीशनड होता है अनलर्नड, कंडीशनड होता है learned. All right, now your unconditioned stimulus is the naturally occurring stimulus present in the environment, जिससे एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एलिसिट होता है विच इज योर नेचुरल एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। ऑलराइट, योर न्यूट्रल स्टिमुलस जिससे कोई रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं होता, बट इफ यू पेयर योर न्यूट्रल स्टिमुलस with your unconditioned stimulus multiple times, then it comes to elicit the same naturally occurring response. All right, then conditioned stimulus is the previously neutral stimulus, जिससे पहले तो कोई response elicit नहीं हो रहा था, but after repeated pairings with the unconditioned stimulus
it comes to elicit the same response, which is now called the learned response or the conditioned response. All right, I hope these terms are clear. Now let's discuss Pavlov's experiment. So Pavlov ने क्या नोटिस किया पहले कि फूड को देखकर dogs begins to salivate, which is a very natural reflexive response, right? However, एक बेल को रिंग करते हुए सुन के there was no response in dogs, all right, no salivation. But when he paired the ringing of the bell with food, then there was salivation, all right. And then eventually what happened कि जब सिर्फ बेल भी रिंग हो रही है तब भी dogs begin to salivate. Now why did that happen? Because if होती है then they get food, all right. So they initially learn to form an association between the ringing of the bell and appearance of food, which led to the discovery of classical conditioning, was also known as learning by association. लर्निंग बाय एसोसिएशन क्यों? क्योंकि डॉग्स ने इवेंचुअली बेल की रिंगिंग और फूड के बीच में एक एसोसिएशन बना लिया, which led them to salivate just at the ringing of the bell. All right, I hope this was clear. Let's move on to the next experiment. Which is your little Albert experiment. ये भी classical conditioning का ही part है. Now, this was conducted by Watson and Rayner at Johns Hopkins. So इन्होंने क्या किया? इन्होंने पावलोव की ही रिसर्च को एक स्टेप फर्दर लेके गए, इन द सेंस कि through their experiment they wanted to prove that emotions or emotional responses can also be conditioned, मतलब can also be learned. ऑलराइट, तो इन्होंने क्या किया, जॉन हॉपकिंस में ही जॉन हॉपकिंस की ही एक नर्स के बेटे को इन्होंने इनरोल किया इन देयर स्टडी एंड शी वाज गिवन $1 फॉर देयर पार्टिसिपेशन. तो दिस बॉय वाज नेम्ड एल्बर्ट. ये इसका असली नाम नहीं है, बट जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट ही वाज कॉल्ड एल्बर्ट. तो पहले तो दे एक्सपोज्ड हिम टू a white rat. Initially, Albert was not scared of the white rat at all. Rather, he was playing with it. But then what happened? Researchers, जब भी उसको white rat दिखाते थे, then they used to bang a very loud noise in his ear. इससे क्या हुआ? After several pairings, जो बच्चा था, जो Albert था, he started to cry just by looking at the rat. अगर नॉइज प्रेजेंट नहीं भी है तब भी अगर वो बस रैट को देख रहा है, he started to cry and show fear. All right, and then eventually what happened is कि जो उसका ये fear था, it generalized to other similar looking objects as well, to a rabbit, to a dog, and even a fur coat. Now this is one of the most controversial experiments in the history of psychology. Why? Because after these pairings, Albert's mother withdrew him from the experiment
एंड द रिसर्चर्स लेफ्ट हिम डीकंडीशन, मतलब उन्होंने उसमें ये डर पैदा कर दिया एंड दे डिड नथिंग टू डीकंडीशन हिम, so which made this experiment very unethical. Alright, इससे पता चलता है कि emotional responses to experiences can also be conditioned. Let's move on to the next experiment, which is your Skinner box. Now, Skinner box was designed by B.F. Skinner. B.F. Skinner का काम और ये experiment is highly influenced by Thorndike and his cats in a puzzle experiment. Now, Thorndike का जो cats in a puzzle experiment था, it was very similar to Skinner box. However, it was not as sophisticated and as not performed in as a controlled environment as Skinner performed his experiment on. But ये B.F. Skinner के काम का basis था. So, let's look at the Skinner box. This is the Skinner box. इसमें देख सकते हैं there are multiple rods जिससे electric shock होता है, then a place to hold a rat. Skinner ने अपना experiment initially rats पे perform किया था and then he moved on to pigeons. So here is a rat, food dispenser, tube जिससे food rat को deliver होता है, a lever, a signal light. Alright, so a rat was placed in this box and then press कर दिया. So he discovered कि lever को press करने पे he is getting food and he is also avoiding the electric shocks. Alright, मतलब उसको food मिल रहा है, एक कुछ reward मिल रहा है and he is also able to avoid something unpleasant, that is the electric shock. फिर क्या हुआ? Eventually he learned कि अगर वो लेवर को प्रेस करता रहेगा तो उसको खाना भी मिलता रहेगा और इलेक्ट्रिक शॉक्स भी नहीं लगेंगे. So this whole experiment led to the phenomena of operant conditioning, which is learning based on consequences. Classical conditioning में आपने देखा था कि classical conditioning is learning by what happens before, alright? But operant conditioning is heavily dependent upon the consequences. अगर कोई reward मिल रहा है या कुछ positive outcome हो रहा है किसी behavior का, then that is more likely to be repeated compared to behavior जिससे कुछ unpleasant experience हो रहा है या कोई punishment मिल रही है. Alright? Now let's move on to the next experiment, which is your latent learning or the maze experiment. This was conducted by Edward Tolman. इन्होंने क्या किया था? एक मेज डिजाइन किया था with 3 groups of rats, जिसके एक एंड पे was a start point, एक एंड पे था food और a reward. ठीक है, तो इन्होंने 3 ग्रुप्स में रैट्स को डिवाइड किया. जो ग्रुप नंबर 1 है, they received a reward of food every time they completed the maze. मतलब वो maze complete कर रहे हैं, they are getting food at the end of it. Group 2, वो बस maze चले जा रहे हैं, they are never getting any reward for it. Group 3, now इनको पहले 10 दिन तक तो कोई reward नहीं मिला, but from 11th day onwards they started to get reward. Alright, now इससे पता क्या चला? So group 1 की performance, gradually they learned the maze. Group 2 showed no learning, showed no improvement. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई motivation ही नहीं थी, कोई reward ही नहीं था to complete the maze. Now group 3 however, इन्होंने suddenly day 11 से, मतलब जिस दिन से इनको reward मिलना चालू हुआ, तब से they showed
इम्प्रूवमेंट, इससे क्या पता चलता है कि उनको मेज का रास्ता तो याद हो चुका था डे 10 तक, बट दे हैड नो मोटिवेशन टू कंप्लीट इट. क्यों? क्योंकि उनको पता था डे 10 तक तो इनको कोई रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा, बट डे 11 से जब उन्हें पता चला कि मेज कंप्लीट करने पे दे आर गेटिंग फूड, so then they were motivated to do so, which led to the discovery of two important terms. First is latent learning. Latent का मतलब होता है hidden. Now, according to Tolman, we form cognitive maps, which is the mental representation of our physical or external environment, and we use it when we have to. Alright, so learning stays hidden until and unless we have to use it in some sort. Alright, so this was latent learning experiment. Let's move on to the next experiment, shall we? Then we have insight learning. Now this was conducted by Wolfgang Kohler. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट चिंपांजीज पे किया था, वन ऑफ whom was named सुल्तान. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रूफ पर एक बनाना लटका दिया जस्ट आउट ऑफ सुल्तान रीच. पहले तो सुल्तान ट्राइड टू गेट द बनाना, पहले वो उस पे पत्थर मार रहा है, स्टिक्स फेंक रहा है जस्ट टू गेट इट, बट नथिंग वाज वर्किंग. सो अचानक से क्या हुआ? he suddenly came to a realization कि as you can see he stacked these boxes on top of another and then reached the banana. This led to the discovery of insight learning, which is learning by sudden realization. Alright, I am sure this must have happened to you कि जब आप consciously किसी चीज के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, but suddenly you come to a solution or you come upon a solution. Alright, now that is known as insight learning, the aha movement. Now सुल्तान ने अचानक से ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कवर किया था थ्रू सडन रियलाइजेशन. Let's move on to the next experiment, which is your Bobo doll experiment. So this was conducted by Albert Bandura. इन्होंने क्या किया था? They showed a video of a person, of an adult playing with a Bobo doll. Bobo doll ये वाली doll होती है. So if you hit it, it comes back. तो इन्होंने दो ग्रुप में चिल्ड्रन को डिवाइड किया था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. सो ग्रुप 1 में ऐसा वीडियो दिखाया था जिसमें द अडल्ट वाज बीइंग वेरी अग्रेसिव विद द बोबो डॉल, और ग्रुप 2 में ऐसा वीडियो दिखाया था जिसमें द अडल्ट वाज प्लेइंग वेरी कामली विद द डॉल. सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, एंड देन द चिल्ड्रन वर लेफ्ट alone with the dolls for some time. So what he observed was that जो ग्रुप 1 के बच्चे थे, they behaved equally aggressive and abusive with the doll compared to group 2 children who played rather calmly with the doll, which led to the discovery of observational learning. Which means that we learn by observing or looking at the behavior of others. All right. Now let's practice some questions. So this is the match the following. Let's look at our option. Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Edward Tolman, Albert Bandura. Now ये हमने अभी डिस्कस की है. So इवान पावलोव ने डिस्कवर की थी क्लासिकल कंडीशनिंग, which is your learning by association. B.F. Skinner ने डिस्कवर की थी ऑपरेंट कंडीशनिंग,
which is learning based upon the consequences. एडवर्ड टोलमैन ने डिस्कवर की थी लेटेंट लर्निंग विच इज हिडन लर्निंग. एल्बर्ट बंड्यूरा ने डिस्कवर किया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनसाइट लर्निंग वाज कैरीड आउट बाय. अभी डिस्कस किया. इज डन बाय पोलर, वुल्फगैंग Kohler. Alright. Now, in Pavlov's theory of classical conditioning, saliva produced by the bell is. Batao. So, saliva produced by bell is your conditioned response. अगर क्वेश्चन में saliva produced by food पूछा जाता तो क्या होता? तभी होता unconditioned response. All right. With that, we are at the end of our session. I hope you enjoyed the video and everything was clear. अगर आपको कोई भी doubt हो, you can always reach out to us. I hope you like the video. You can scan this QR to join our WhatsApp and Telegram group. And you can follow us on Facebook and Instagram for daily updates. Thank you for watching.